Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, how are you all? Hoping you are enjoying good health at home. Beta, in our previous lesson, we talked about paper pattern and syllabus, and today we will take a start from our very first lesson from book 2. And the title of this prose or lesson is The Dying Sun. The Dying Sun is the very first lesson from your prose, modern prose and heroes. Well, first of all, I would like to talk about the author of this piece of writing. Actually, Sir James Hopwood Jeans, he is the author of this piece of writing. He was born in the year 1877 and was died in 1946. We see that he was a famous British astronomer, mathematician and physicist. And what does he portray? What does he want to tell us through this piece of writing? He just wanted to tell us, just wanted to tell us about his theory regarding the creation of the world. And what is the opinion of the author? He says that our world and life have very little value in this universe. Yani, he shows us the worthlessness of our little planet Earth as compared to the rest of the universe. And then we see that it is basically a scientific explanation regarding how did Earth, life and the planets come into existence. It is something like Big Bang theory, that how did the planets and all the planets come into existence. What happened which became the cause of the appearance of Earth. Then we see that how did our planetary system formulated, or it came into existence. First of all, we have to define what is meant by solar system, what is meant by planetary system. Actually, the sun together with all the planets which revolve round it, which circulate round it in their orbits, this system is called planetary system. This is called our solar system. So beta, the title of the first lesson is The Dying Sun. Dying sun here stands for disappearing sun, the sun losing its heat, or a sort of upheaval or a sort of disturbance on the surface of the sun, which resultantly became the cause of the existence of the planets. Well, beta, let's move onwards. First of all, I would like to give you a brief introduction regarding what is the part of this, what is in this lesson basically. We see the writer, he just wants to tell us about the sizes of the stars. He tells us that what is actually the size, what is the size of a star, or what are the sizes of different stars. He also let us know about the number of stars in the universe. And he also informs us that how is it that it is a very, very rare event that a star come close to another, a star come near to another. Why is it so? He provides us its detail quite artistically, quite beautifully and rather scientifically. We see he is of the opinion that a few stars are hardly bigger than Earth, but there are numbers of millions of stars, thousands of stars in the universe which are much larger or larger enough as compared to Earth that thousands of lands can be packed inside, and even then living room to spare. Similarly, when talking about the number of stars in the universe, he says that the total number of stars in the universe is something like the total number of grains of sand on all the seashores of the world, and that is something very interesting. And we find that why does it happen that a star seldom find another star near it? The reason is
that there is a distance of millions, billions of miles between two stars. That is why it happens rarely that a star come close to another one. But once some 2000 millions ago this happened, like a star wandering in the space. It came closer to the sun. It started throwing its rays, its radiations on the surface of the sun, thus forming a big mountain. And when the star receded, when it started moving back, its magnetic power, its gravitational pull had become so powerful that the mountain was burst or torn into pieces, and all these pieces got scattered in the space. And these basically are our planets. These are small and big in size, and these are revolving around the sun in their specific orbits, and that builds our planetary system. Then we come to know about the beginning of life on the planet of Earth. Actually, the writer is of the opinion that the life started in simple organisms, in tiny organisms or living bodies, which were able to reproduce themselves before dying, and the continuity or the flow of life eventually produced human beings, or human being come into existence. And human being is a creature which is having their own aspirations, their own ambitions, aestheticism, and their connection with their religions. So all these things are the part of this lesson. Then we come to know that why does this universe make us feel frightened? The writer has elaborated different reasons for that. He says that the universe is frightening because of the immense distances, because of the stretches of time spreading here and there, and because of the feeling of our being lonely on this planet Earth, because the life like us does not exist anywhere else apart from the planet Earth. Similarly, we see the writer tells us that why does life not exist on other stars or on the stars? Because they are far too hot for life to exist on them. So what type of physical conditions or situation is required for the appearance or emergence of life basically? It is a moderate temperature basically at which all the things remain in liquid form. So all these interesting things we come to know, or we learn after reading this valuable, knowledgeable and very informative lesson. जी बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है, बहुत मुफीद है, बहुत कारामत है, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि हमारी इल्म में आती हैं. आप देखिए इस लेसन में सर जेम्स जीन्स जो है हमसे किन बातों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. सर जेम्स जीन्स जो है यूनिवर्स, क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड, स्टार्स, प्लैनेट्स, इमर्जेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, ये सब चीज़ें जो हैं वो एलेबोरेट कर रहे हैं. साथ साथ हर चीज़ जो है उसको एलेबोरेट करते जा रहे हैं. हमें ये बताया जा रहा है कि सितारे जो है वो कितने बड़े हैं, उनका हुजम, उनका साइज़ कितना बड़ा है. कहा जा रहा है कि कुछ सितारे तो ऐसे हैं जिसमें हमारे जैसे ही कई ज़मीनें जो हैं वो समो दी जाएं तब भी जगह बच जाए, और कुछ सितारे ऐसे हैं जिनमें लाखों बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अर्थ जो है वो अगर फिल कर दी जाएं तब भी जगह बच जाए. यानी सितारे जो हैं वो बहुत बड़े बड़े साइज़ के हैं कि उसमें हमारे जैसी कई ज़मीनें फिल कर दी जाएं, पैक कर दी जाएं तो तब भी जगह बच जाए. फिर हमें बताया गया है कि यूनिवर्स में टोटल नंबर ऑफ़ स्टार्स जो है वो क्या है. हमें ये बताया जा रहा है कि दुनिया के तमाम साहिल समंदर पर मौजूद जो रेत के ज़र्रात हैं, अगर उन ज़र्रात को गिना जा सके, उन्हें गिनना मुमकिन हो, तो बिल्कुल इतनी ही तादाद इन सितारों की भी होगी. इसी तरह से हमें ये बताया जा रहा है कि सितारे जो हैं, हाउ डू द स्टार्स ट्रैवल इन स्पेस, वो स्पेस में किस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं. बहुत से स्टार्स ऐसे हैं जो
कंपनी ग्रुप्स में, क्लस्टर्स में सफ़र करना पसंद करते हैं। बहुत से स्टार्स ऐसे हैं जो कि अपना जर्नी अब सॉलिट्यूड में या ऑल अलोन अपना सफ़र जो है वो जारी रखना पसंद करते हैं। फिर हमें ये बताया गया है कि चूँकि सितारों के दरमियान मिलियंस ऑफ माइल्स डिस्टेंस है, मीलों के फासले हैं, इसी वजह से ये बहुत रेयर इवेंट है। सेल्डम ही ऐसा होगा कि कोई एक सितारा कहीं स्पेस में भटकता हुआ किसी दूसरे सितारे के करीब पहुंच पाए। ऐसा कोई 2000 मिलियन साल पहले ऐसा ही एक वाक़या वकूअ पज़ीर हुआ कि एक सितारा खला में भटकता हुआ सूरज के करीब पहुंच गया और जनाब सूरज के करीब पहुंचकर उसने अपनी जो ग्रेविटेशनल पुल है, जो अपनी रेडिएशंस है, जो अपनी रेज है, पोर डाउन करना शुरू कर दी। उसके नतीजे में क्या हुआ कि सूरज की सतह पर एक माउंटेन जो है वो अपीयर हो गया और ये माउंटेन जो है उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये बढ़ता चला गया, उभरता चला गया, यानी अ पार्ट ऑफ द सन गॉट स्वोलन। एक हिस्सा जो है वो सूजा, बढ़ा और एक माउंटेन शेप में सामने आ गया। और when this star actually started receding back, when it started to move back, तो out of its gravitational force that mountain was burst into pieces। और जब ये सितारा पीछे हटना शुरू हुआ तो उसकी मकनातीसी कुव्वत की वजह से, उसके लहरियाती कुव्वत के सबब, उन असरात की वजह से वो जो माउंटेन है वो बस्ट हो गया एंड ऑल द पीसेस ऑफ दैट माउंटेन गॉट स्कैटर्ड इनटू द स्पेस एंड स्टार्टेड रिवॉल्विंग राउंड द सन। और क्या है जनाब, ये जो तमाम पीसीस हैं बेसिकली दीज आर प्लैनेट्स। ये जो 8 प्लैनेट्स हैं हमारे, मरकरी, नेपच्यून, प्लैनेट और इस तरह से 8 प्लैनेट जो हमारे हैं वो ये सब के सब रिवॉल्व कर रहे हैं सूरज के गिर्द। प्लूटो जो है, प्लूटो इट वॉज वंस द पार्ट ऑफ दिस सोलर सिस्टम, प्लैनेटरी सिस्टम, बट इट इज़ सेड टू बी अवे फ्रॉम the orbiting or circulation or its specification, that is why it is away from the sun. It is not part of sun right now. It's part of our planetary system right now. वेल बेटा, इसमें फिर हम क्या पढ़ते हैं अबाउट द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, कि ज़िंदगी का ज़हूर जो है, ज़िंदगी ने नमू कैसे पाया इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर। फिर इसके बाद हमें ये बताया जाता है कि ये यूनिवर्स जो है ये हमारे लिए इतनी फ्राइटनिंग क्यों है, हम इससे खौफजदा क्यों होते हैं। वो इस वजह से कि इसमें जो लंबे लंबे फासले हैं कायनात में, स्टार्स के अंदर फासले मौजूद हैं और इसका जो ज़मान व मकान का तसव्वुर है वो सब चीज़ें हमें हैरान कर देते हैं और ये सोच के हमारे प्लेनेट के सिवा कहीं और ज़िंदगी का ज़हूर नहीं है। ये सब चीज़ें हमें खौफज़दा कर देती हैं, ये सब चीज़ें हमें हॉरिफाई कर देती हैं। ये सब चीज़ें जो हैं बहुत खूबसूरती से, बहुत उम्दगी से राइटर ने स्टेप बाय स्टेप इस लेसन के अंदर एलेबोरेट की है। इसको पढ़ते हैं, इसको बुक में इसकी बुक स्टडी करते हैं और इसके जो सिनोनिम्स हैं वो भी साथ साथ मैं आपको लिखवाती जाऊंगी बोर्ड के ऊपर। बेटा एक और अहम चीज़ ये है कि चूँकि आपके चैप्टर के एंड पे तकरीबन 7 या 8 के करीब क्वेश्चंस हर चैप्टर के एंड पे मौजूद हैं, तो उन वो क्वेश्चंस जो हैं एक लिहाज से सफिशेंट नहीं है, नॉट नेसेसरीली कि उसी में से बोर्ड के क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट किए जाएँ, क्योंकि आपके टेक्स्ट में से कहीं से भी कोई क्वेश्चन भी आपके लिए सिलेक्ट बनाया जा सकता है, सिलेक्ट किया जा सकता है। तो लिहाजा यूनिक नोट्स के अंदर आपके टेक्स्ट के एंड में एक्सरसाइज में मौजूद जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा वो एडिशनल मुमकिन क्वेश्चन जो हर पैराग्राफ में से सिलेक्ट किए जा सकते हैं, जो हर पैराग्राफ में मौजूद हैं, वो भी आपकी मालूमात के लिए, आपकी तैयारी के लिए वो भी इस नोट्स का हिस्सा बनाए गए हैं ताकि आप अच्छी तरह से उनको प्रिपेयर करें। तो बेटा जब टेक्स्ट पढ़ें तो उसको बहुत तवज्जो करें, क्योंकि किसी तरह का क्वेश्चन भी आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है। और जब आपने टेक्स्ट पढ़ी होगी, जब आपने लेसन अच्छी तरह से समझा होगा, सुना होगा और सीखा होगा और उसको रिवाइज़ किया होगा, तो यकीनी तौर पर यू विल बी इन अ पोजिशन टू गिव वेरी गुड आंसर टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन विच माइट बी द पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। ठीक है जी बेटे, तो किताब लेते हैं और इस लेसन का आगाज़ करते हैं। जी बेटा, the very first lesson is the dying sun. Well beta, let us start our first lesson, the dying sun. I have already summarized it for your convenience. Well, let's see
what we learn. A few stars are known which are hardly bigger than the earth. Hardly means scarcely. Here I have written down this word hardly. Hardly means scarcely, almost not. A few stars are known which are hardly bigger than the earth, but most of them are so large that hundreds of thousands of earths could be packed inside each and leave room to spare. तो दैट इज़ समथिंग वेरी इन्फॉर्मेटिव. हमें ये बताया जा रहा है कि कुछ सितारों के बारे में हमारी मालूमात हैं जिनमें बामुश्किल हमारी ज़मीन जो है वो समाई जा सकती है, जिसकी जिसामत यानी सितारों की जिसामत का जिक्र किया जा रहा है कि कुछ सितारे हुजम अपनी जिसामत के लिहाज से इस तरह के चंद सितारे दिखाई देते हैं या हमारे इल्म में है जिसमें बामुश्किल हमारी ज़मीन जो है वो समोई जा सके, लेकिन थाउजेंड्स और मिलियंस की तादाद में हमें ऐसे बेशुमार सितारे जो हैं वो नज़र आते हैं जिसमें हमारी ज़मीन जैसी कई ज़मीनें, कई प्लैनेट्स ना सिर्फ ये कि पैक कर दिए जा सकते हैं, उसमें फिल किए जा सकते हैं, बल्कि लाखों की तादाद में ज़मीनें उसमें समोई जाने के बाद भी, समो दिए जाने के बाद भी काफ़ी जगह जो है हमें खाली नज़र आएगी. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द साइज़ ऑफ अ स्टार, द साइज़ ऑफ डिफरेंट स्टार्स. तो द राइटर इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट अ फ्यू स्टार्स are known hardly, which can accommodate, in which we can pack hardly, which are the stars are hardly bigger than Earth, but millions of the stars are of the size that we can accommodate thousands of Earths in them, and even then we will find room to spare. We will find empty space or place. Here and there we find an immense star large enough to contain millions of Earths. और कोई ना कोई सितारा हमें कायनात में अपनी स्पेस में ऐसा भटकता हुआ नज़र आ जाता है जिसमें अगेन वही बात जो है रिपीट की जा रही है कि लाखों की तादाद में ज़मीनें जो हैं उस बड़े सितारे के अंदर समोई जा सकती हैं, उस बड़े सितारे के अंदर जगह पा सकती हैं. And the total number of stars in the universe is probably something like the total number of grains of sand on all the seashores of the world. Grains mean particulars. Beta, I have written word meaning over here for your convenience. Hardly means scarcely, almost not, बामुश्किल, ना होने के बराबर. Packed mean filled. Spare mean extra space, खाली जगह. Immense means very large, बहुत बड़ा. Probably, perhaps, शायद. Grains, particles. तो हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? And the total number of stars in the universe is probably something like the total number of grains of sand on all the seashores of the world. Here again we find a very valuable information regarding the total number of stars in the universe. Actually these stars are countless as the space is limitless. जिस तरह स्पेस जो है वो लिमिटलेस है, लामहदूद है, इस तरह से सितारों की गिनती, इसका शुमार करना मुमकिन नहीं है. सितारे जो हैं वो बेशुमार हैं, लातादाद हैं और इन्हें गिनना, इनका शुमार करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क, rather not possible to some an extent. तो हमें कहा जा रहा है आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड में अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स. तो आप उसका जवाब क्या लिखेंगे? जवाब में आप इन लाइंस को, जो लाइन आप पढ़ते हैं, जो आपको पढ़ाई जा रही हैं, उनको साथ साथ अंडरलाइन करते जाइए ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि आपने ये मुख्तलिफ पैराग्राफ में चीज़ें पढ़ी थी और ये क्वेश्चन इसके मुमकिन बन सकते हैं और इसका जवाब जो है वो हमें कितनी आसानी से बुक में से आसानी से ट्रेस किया जा सकता है. तो व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स? द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स इज लाइक द ग्रेन्स ऑफ सैंड्स ऑन ऑल द सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड. क्या दुनिया के तमाम साहिल समंदर जो हैं वहाँ मौजूद रेत के ज़र्रों का शुमार मुमकिन है? नहीं है. द सेम इज़ द केस विद द स्टार्स कि इनकी तादाद जो है वो भी
तादाद का शुमार करना मुमकिनात में से नज़र नहीं आता है। जी नेक्स्ट हम देखते हैं, सच इज़ द लिटिलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस। लिटिलनेस मीन्स वर्थलेसनेस। वर्थलेसनेस क्या होता है कि अहमियत ना होना, किसी चीज़ की वर्थ ना होना, किसी चीज़ की वेटेज ना होना, किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस ना होना। तो सच इज़ द लिटिलनेस ऑफ आवर होम इन द स्पेस। तो खला में जब हम अपनी अर्थ को देखते हैं तो ये हमें किस कदर छोटी बेमाया यानी बेवकत सी नज़र आती है, गैर अहम सी नज़र आती है, यानी इसका वजूद जो है वो किस कदर हमें छोटा महसूस होता है। इस पूरी कायनात में, इतनी बड़ी कायनात में जिसमें लातादाद सितारे हैं जिनका शुमार मुमकिनात में से नहीं है, और वहाँ अगर रेत के ज़रात का वहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कि हमारी अर्थ जो है उसकी क्या वक़्त है स्पेस में, इस यूनिवर्स में, तो ये बहुत ही कम अहमियत की हामिल है। When measured up against the total substance of universe, measured up means calculated. Calculated means शुमार करना। Substance mean matter, material, वो तमाम मादा जो यूनिवर्स में मौजूद है। तो such is the littleness of our home, earth in the space, when we measure it up against all the substance which is the part of this universe. तमाम कायनात में मौजूद जितना भी मादा मौजूद है उन सब के साथ जब कंपेयर किया जाता है तो हमारी ज़मीन जो है वो बिल्कुल बेवकत सी, गैर अहम सी दिखाई देती है, नज़र आती है। ठीक है जी बेटे, आपको फर्स्ट पैराग्राफ में दो अहम सवाल नज़र आए कि व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ अ स्टार एंड व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स, इन द स्पेस यू कैन से। Coming towards our next paragraph, let's see what new we learn. These millions of stars are wandering about in space. So the question comes in mind कि how does these stars move in space? Space में ये सितारे किस तरह से move कर रहे हैं? तो हमें बताया जा रहा है कि दिस मिलियंस ऑफ स्टार्स आर वंडरिंग अबाउट इन स्पेस। वंडरिंग मीन रोमिंग। ये तमाम सितारे जो हैं ये क्या कर रहे हैं जी, स्पेस में वंडरिंग कर रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है जनाब। अ फ्यू फॉर्म ग्रुप्स विच जर्नी इन कंपनी। ग्रुप्स मीन वंडरिंग मीन रोमिंग एंड ग्रुप्स मीन क्लस्टर। अ फ्यू ट्रेवल इन ग्रुप्स। कुछ सितारे जो हैं वो गिरोहों की शक्ल में मिलकर कहकशाओं की शक्ल में सफ़र कर रहे हैं, नज़र आते हैं। लेकिन क्या है, मोस्ट ऑफ देम दे जर्नी, दे लव टू जर्नी ऑल अलोन। अलोन मीन इन सॉलिट्यूड, ऑल अलोन। कि बहुत से सितारे ऐसे हैं जो कि ऑल अलोन, तन्हा अपना सफ़र जो है वो जारी रखे हुए हैं। एंड दे ट्रैवल थ्रू अ यूनिवर्स so immense that it is very, very rare event. Rare mean seldom. Rare event, unusual happening. Unusual happening. गैर वकू पजीर होने वाला वाक़या। And they travel through a universe so immense, और इतनी बड़ी कायनात में ये सितारे इस तरह से गर्दिश कर रहे हैं that it is a very, very rare event indeed for one star to come anywhere near to another. तो क्या होता है कि इतनी बड़ी कायनात में चूँकि बेशुमार सितारे जो हैं ऑल अलोन भी गर्दिश कर रहे हैं, तो इट इज़ वेरी रेयर इवेंट फॉर अ स्टार टू कम क्लोज टू अनदर, टू क्लाइड अगेंस्ट अनदर स्टार बिकॉज ऑफ द इमेंस डिस्टेंसेस। लंबे लंबे फासलों की वजह से एक सितारे के लिए मुमकिन ही नहीं कि वो दूसरे सितारे के करीब भी पहुँच पाए या उससे टकरा जाए। तो वाई डू नॉट द स्टार्स कोलाइड विद अनदर स्टार? दूसरे सितारे के साथ वो क्यों नहीं टकरा सकता? बिकॉज देयर इज़ द डिस्टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ माइल्स बिटवीन स्टार्स। तो दैट इज़ वाई it is a very, very, very rare event for a star to come close to another star. For the most part, each star makes its voyage in complete loneliness. और ज़्यादातर सितारे हमें किस सूरत हाल में नज़र आते हैं? They travel, they make their voyage in complete solitude. यानी जैसा कि पहले भी बात हुई कि वो तन्हा सफ़र में रहते हैं, तन्हा महवे गर्दिश रहते हैं।
लाइक अ शिप ऑन एन एम्प्टी ओशन। और एक बहुत उम्दा मिसाल हमें दी गई है कि दीज स्टार्स, दीज आर मूविंग इन द स्पेस लाइक दैट ऑफ अ शिप इन एन एम्प्टी ओशन। जिस तरह हमें खाली समंदर में, ओशन मीन अ बिग सी, ओशन व्हाट डज इट मीन, ओशन मीन अ बिग सी, इट्स ऑल्सो रिटन ओवर हियर, अ ग्रेट सी। तो एक बहुत बड़े समंदर में एक तन्हा जहाज़ जिस तरह से सफ़र करता हुआ दिखाई देता है और दूसरे जहाज़ उससे ओझल होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही एक सितारे से दूसरा सितारा जो है बहुत ज़्यादा फासले की सबब, बहुत ज़्यादा दूरी की सबब उससे ओझल रहता है। इन अ स्केल मॉडल इन विच द स्टार्स आर शिप्स, द एवरेज शिप, एवरेज मीन द कॉमन, will be well over a million miles from its nearest neighbor। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो डिस्कस की जा रही है कि अगर एक स्केल मॉडल लिया जाए और उसमें एक एवरेज शिप को जब हम एक स्केल मॉडल लेते हैं और इसके अंदर हम शिप्स जो हैं उनको बहरी जहाज़ों को ये स्टार्स तस्वुर कर लें, तो हर बहरी जहाज़ से दूसरे बहरी जहाज़ का फासला जो है वो मीलों दूर होने के सबब वो हमें दिखाई नहीं देता। बिल्कुल यही हाल सितारों के हवाले से भी है। एक मॉडल हमें इस चीज़ को इंडिकेट करने में मदद कर सकता है कि एक जहाज़ से समंदर में दूसरा जहाज़ बहुत दूर होने के सबब दिखाई नहीं देता, नज़रों से ओझल रहता है। इसी तरह से सितारे भी मिलियंस ऑफ माइल्स डिस्टेंस की वजह से एक दूसरे से बिल्कुल दूर है, एक दूसरे से ओझल है। जी बेटा, from this it is easy to understand why a star seldom finds another anywhere near it। seldom means rarely, और यही वजह है, यानी this very statement of a scale model is enough to indicate that why does a star seldom or rarely come close to another star, कि वजह क्या है कि एक स्टार एक दूसरे के करीब क्यों नहीं पहुंच पाता, बहुत ज़्यादा फासलों के सबब। ये एक दूसरे से दूर रहते हैं, एक दूसरे के करीब गर्दिश करते हुए नहीं पहुंच पाते। We believe, however, that some 2000 million years ago this rare event took place। took place mean occurred, occurred mean happened, वक़ू पज़ीर होना, वाक़या होना। rare mean क्या होगा, unusual, rare here stands for unusual and took place mean occurred। तो हमें बताया जा रहा है तकरीबन 2000 मिलियन साल पहले ऐसा ही एक वाक़या जो है जो वक़ू पज़ीर होता हुआ दिखाई देता है, और वो वाक़या जो है वो क्या था, and that another star wandering blindly through space, कि एक सितारा भटकता हुआ खला में कहीं से गर्दिश करता हुआ निकलता है, आता है, happen to come near the sun, और इस सितारे का टारगेट क्या है, इसका टारगेट सन है, यानी ये सितारा भटकता हुआ a wandering star moving blindly through space happen to come close to the sun। और देखते हैं जनाब, जब ये सूरज के करीब पहुंचता है तो किस तरह के असरात जो है वो सूरज की सतह पर मुरत्तिब होते हैं। जस्ट एज द सन एंड मून रेज टाइड्स, टाइड्स मीन waves on the earth, so the second star must have raised tides on the surface of the sun। हम देखते हैं कि किस तरह से सूरज और चाँद जो है वो किस तरह से हमारी अर्थ पे, हमारे समंदरों में किस तरह से वो मद्दोजज़र पैदा करता है और किस तरह से वो मुख्तलिफ़ असरात जो है वो लाने का सबब बनता है। बिल्कुल इसी तरह से ये सितारा, ये जो जिस तरह से ये मुख्तलिफ़ चाँद और सूरज जो है वो हमारी अर्थ पे असरात मुरतब करते हैं, इसी तरह से सो दिस सेकंड स्टार मस्ट हैव रेज्ड टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन। तो ये जो सेकंड स्टार है जो कि सूरज के करीब पहुंच रहा था, इसने यकीनी तौर पर सूरज की सतह पर अपनी शुआएं डाली होंगी, बट दे वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लिटिल टाइड्स विच द स्मॉल मास ऑफ मून रेजेस इन आवर ओशन। लेकिन ये शुआएं जो कि उस सितारे ने अपने जो ग्रेविटेशनल पुल है वो जनाब डाली सूरज की सतह पर, ये उन रेस से बहुत मुख्तलिफ होगी जो चाँद की शुआएं जो मद्दोजज़र हमारे समंदरों में पैदा करती हैं, ये शुआएं उनसे यकीनी तौर पर बहुत मुख्तलिफ होंगी। At last forming mean creating a mountain so high that we can hardly imagine।
अब क्या है, आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ दैट स्टार विच वॉज अप्रोचिंग नियर द सन, ऑटोमेटिकली a mountain, a huge mountain started to form. एक पहाड़ जो है उसके ऊपर बनना शुरू हो गया, और यानी a part of sun got swollen. As the cause of disturbance came nearer and nearer. What was the cause of disturbance? The cause of disturbance was definitely that star which was causing upheaval on the surface of the sun. ये cause of disturbance, the cause of problem क्या था? वो सितारा जो सूरज के करीब पहुंच रहा था, तो जैसे जैसे वो करीब आता गया उसकी मैग्नेटिक पावर जो है वो बढ़ती गई. द माउंटेन वुड राइज हायर एंड हायर. तो नतीजतन वो माउंटेन जो है वो बुलंद से बुलंद होता चला गया. एंड बिफोर द सेकेंड स्टार बिगेन टू मूव अवे अगेन, और इससे पहले कि वो दूसरा करीब आने वाला सितारा पीछे हटना शुरू करता, इट्स टाइडल पुल मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स हैड बिकम so powerful, strong, that this mountain was torn into pieces. Torn mean burst. Or when the star actually started to recede, started to move back, तो क्या हुआ कि उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, यानी जब सितारा पीछे हटना शुरू हुआ आहिस्ता आहिस्ता सरफेस ऑफ सन से, तो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़ेरे असर वो माउंटेन जो है वो बस्ट हो गया, टुकड़ों में फट गया. एंड सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. And three of small parts fragments of itself into space. और इसके जो टुकड़े थे वो स्कैटर हो गए कहाँ? स्पेस में. तो these small pieces have been going round the sun ever since. Ever since means since that time. और उस वक्त से अब तक ये टुकड़े जो हैं, स्कैटर टुकड़े जो हैं, they are circulating in their specific orbits round the sun, and they are our planets, great and small, of which our Earth is one. And basically these broken pieces of the sun are basically called planets, and our planet Earth is definitely one of them. So this is the most important question of the chapter which we read today, कि how did our planet Earth come into existence, or write a note on the planetary system, or how did planet come into being, कि planet जो है वो वजूद में कैसे आए. ये जो सोलर सिस्टम है, ये तमाम प्लानिटरी सिस्टम है, ये वजूद में कैसे आया. नहायत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, इसको बहुत तवज्जो से दोबारा रिवाइज़ कीजिएगा, दोबारा से पढ़िएगा. इट इज़ रियली वेरी मच असेंशियल टू कॉम्प्रीहेंड, सो दैट यू वुड बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड इट इन अ बेटर वे. एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं वर्ड्स मीनिंग को. जो आज जितनी टेक्स्ट हमने आज पढ़ी उसमें जो वर्ड्स आपने पढ़े वो साथ साथ मैंने आपको बताए और बोर्ड पर भी लिखे हैं, उसको पढ़ लेते हैं. हार्डली मीन्स स्कार्सली, ऑलमोस्ट नॉट, बामुश्किल, ना होने के बराबर. फैट मीन फिल्ड, यानी समाई जाना, समो दिया जाना. स्पेयर मीन एक्स्ट्रा स्पेस, खाली जगह. इमेंस, वेरी लार्ज, बहुत बड़ा. प्रोबेबली, परहैप्स, शायद. Grains mean particles, ज़र्रात. Littleness, worthlessness, किसी चीज़ का गैर अहम, बेवकत होना. Measured up, calculated. Calculated का मतलब तखमीना लगाना, अंदाज़ा लगाना, to make an assessment. Substance, matter, material, मादा. Wandering, roaming, यानी गर्दिश करना, घूमना. Groups mean cluster, झुंड को, गिरोह को ग्रुप कहा जाता है. Rare event means unusual happening, गैर मामूली वाक़या. Voyage mean journey, सफ़र. And loneliness means solitude, all alone, तन्हाई. Ocean, a great sea, बहुत बड़ा समंदर. Average, normal, common, आम. Seldom, rarely, कभी कभार, कम होने वाला, बहुत कम होने वाला. नायाब, शाज़ो नाज होने वाला. Took place mean occurred, happened, वकू पजीर होना. Raise, pour down, throw, फेंकना, डालना. Tides mean waves, लहरें. Surface, outer side, बैरूनी सतह. Mass, matter, matter mean मादा. Imagine, think of, तसव्वुर करना. Ever since, since that time, यानी उस वक्त से अब तक.
जी बेटा, आज हमने जो लेसन पढ़ा उसको ये मीनिंग, ये सब वर्ड्स और मीनिंग कवर कर रहे हैं एंड आई वुड लाइक यू टू रिवाइज दिस लेसन टुडे एंड यू मस्ट memorize the questions as well as the synonyms of the lesson ताकि इसको हम नेक्स्ट कंटिन्यू रख सकें और नेक्स्ट आप इसको मज़ीद अच्छी तरह से समझ सकें. Thank you very much for being with us and hoping to see you in our next lecture. Allah Hafiz. Stay home, stay safe.